श्रीगणेशाय नमः। पार्वत्युवाच कैलासिवासिन् भगवन् भक्तानुग्रहकारक राधिका कवचं पुण्यं कथयस्व मम प्रभो। यद्यस्ति करुणानाथ त्राहि मां दुःखतो भयात् त्वमेव शरणं नाथ शूलपाणे पिनाकधृक्। शिव उवाच शृणुष्व गिरिजे तुभ्यं कवचं पूर्वसूचितं सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वहत्याहरं परं हरिभक्तिप्रदं साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रसाधनं त्रैलोक्याकर्षणं देवी हरिसान्निध्यकारकं सर्वत्र जयदं देवी सर्वशत्रुभयावहं सर्वेषां चैव भूतानां मनोवृत्तिहरं परं चतुर्धा मुक्तिजनकं सदानन्दकरं परं राजसूयाश्वमेधानां यज्ञानां फलदायकम् इदं कवचमज्ञात्वा राधामन्त्रं च यो जपेत् सनाप्नोति फलं तस्य विघ्नास्तस्य पदे पदे। ऋषिरस्य महादेवो नुष्टुप्छन्दस्य कीर्तितं राधास्य देवता प्रोक्ता रामबीजं कीलकं स्मृतं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। श्रीराधा मे शिरः पातु ललाटं राधिका तथा श्रीमती नेत्रयुगलं कर्णौ गोपेन्द्रनन्दिनी हरिप्रिया नासिकां च भ्रुयुगं शशिशोभना ओष्ठं पातु कृपादेवी अधरं गोपिका तथा वृषभानुसुता दन्तांश्चिबुकं गोपनन्दिनी चन्द्रावली पातु गण्डं जिह्वां कृष्णप्रिया तथा कण्ठं पातु हरिप्राणा हृदयं विजया तथा बाहुद्वौ चन्द्रवदना उदरं सुबलस्वसा कोटियोगान्विता पातु पादौ सौभद्रिका तथा नखंश्चन्द्रमुखी पातु गुल्फौ गोपालवल्लभा नखान्विधुमुखी देवी गोपीपादतलं तथा शुभप्रदा पातु पृष्ठं कुक्षौ श्रीकान्तवल्लभा जानुदेशं जया पातु हरिणी पातु सर्वतः वाक्यं वाणी सदा पातु धनागारं धनेश्वरी पूर्वां दिशं कृष्णरता कृष्णप्राणा च पश्चिमाम् उत्तरां हरिता पातु दक्षिणां वृषभानुजा चन्द्रावली नैशमेव दिवाक्ष्वेडितमेखला सौभाग्यदा मध्यदिने साह्यान्ये कामरूपिणी रौद्री प्रातः पातु मां हि गोपिनी रजनीक्षये हेतुदा संगवे पातु केतुमाला दिवार्धके शेषापराह्न समवे शमिता सर्वसन्धिषु योगिनी भोगसमये रतौ रतिप्रदा सदा कामेशि कौतुके नित्यं योगे रत्नावली मम सर्वदा सर्वकार्येषु राधिका कृष्णमानसा इत्येतत् कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं सर्वरक्षाकरं नाम महारक्षाकरं परं प्रातर्मध्याह्नसमये साह्यान्ये प्रपठेद्यदि सर्वार्थसिद्धिस्तस्य स्याद्यन्मनसि वर्तते राजद्वारे सभायां च संग्रामे शत्रुसङ्कटे प्राणार्थनाशसमये यः पठेत् प्रयतो नरः तस्य सिद्धिर्भवेद्देवी न भयं विद्यते क्वचित् आराधिता राधिका च तेन सत्यं न संशयः गङ्गास्नानाद्धरेर्नाम ग्रहणाद्यत्फलं लभेत् तत्फलं तस्य भवति यः पठेत् प्रयतः शुचिः हरिद्रारोचनाचन्द्रमण्डितं हरिचन्दनं कृत्वा लिखित्वा भूर्जे च धारयेन्मस्तके भुजे कण्ठे वा देवदेवेशी स हरिर्नात्र संशयः
कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टिं स्थितिं हरिः संहारं चाहं नियतं करोमि कुरुते तथा वैष्णवाय विशुद्धाय विरागगुणशालिने दद्यात् कवचमव्यग्रमन्यथा नाशमाप्नुयात् इति श्रीनारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे राधाकवचं सम्पूर्णम्।